Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum pyare bachcho. Welcome back to the English lesson. I am your teacher Miss Sadaf and today we are going to start and talk about a sound that we have done in the previous lesson. तो आज हमारा जो lesson है और जो sound है उसका day 2 है. That means the first day you were told about a sound and we were discussing about it and what was it. So let's see and recall what was the sound. आज का जो हमारा ELO है dear teachers, it's about the digraph sh. जी हाँ, in the previous lesson we were introducing the digraph sh. What is a digraph? A digraph is a combination of two letters which make one single sound. sh. श. जी हाँ, इससे पहले हमने लेसन में श के साउंड के बारे में एक्टिविटीज की थी. श के साउंड वाले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था अपने सराउंडिंग्स में भी, प्लेग्राउंड में भी, और मैंने आपको घर पे भी ढूंढने के लिए कहा था कि ट्राई टू फाइंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू इन योर हाउस विच हैव द इनिशियल साउंड श. तो देखते हैं कि आज हमने जो अपना लेसन करना है उसके लिए जो हमारे ELOs हैं वो क्या कह रहे हैं. रिकग्निशन ऑफ डायग्राफ्स, use correct pronunciation. So teachers, today we are going to recognize the digraph. That means today children are going to give us feedback of what they remember from the previous lesson and what objects were they able to find in their surroundings which had the initial sound sh. Sh, it's a digraph and it is always written in combining of two letters. So let's see. इन ELOs को हम डिस्कस करेंगे and they are available on your book page shown right here on the screen. ये आपकी बुक का पेज है जिसको आज आप करेंगे. प्रीवियस लेसन में हमने क्या किया था, हमने एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन को डिस्कस किया था जिसमें they were two boys, Asad and Ali, and they were talking about the shopping. Yes, remember? तो उस सारी कॉन्वर्सेशन में जो हमने वर्ड्स सीखे थे उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी एक्शन एक्टिविटी है. तो प्यारे बच्चों, if you have space, you can stand up. Otherwise, you can sit on your seats and perform the action. Dear teachers, the action is given on the book. It says, place your index finger over your lips and say shh. Now, take your index finger, place it on your lips and make the sound shh, shh, shh. जी शाबाश. तो जल्दी से सारे बच्चे ये एक्टिविटी कर लें. श की साउंड को प्रैक्टिस कर लें. शाबाश, वंडरफुल. Good. Now let's see what were the words in our conversation yesterday. Shoes, shampoo, shopping, sharpener, and shopping mall. These were the words of the sh digraph in the conversation in the previous lesson. So teachers, जरा इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और बच्चों से कहें कि इन एक तो वर्ड्स को दोबारा से रीड कर लें, रिकॉल कर लें. अगर आपने प्रीवियस लेसन वाली एक्टिविटी यानी वो जो कॉन्वर्सेशन है उसको दोबारा से बच्चों से रिपीट करवाना है तो वो करवा लीजिए, या आपके आसपास मौजूद जो एनवायरनमेंट है क्लासरूम का उसमें से कुछ चीज़ आइडेंटिफाई करवा लें. इंगेज करें बच्चों को तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, जिनमें उनसे आप डिफरेंट मटीरियल के ज़रिए श की रिकग्निशन करवाएं. एंड मीनवाइल आई विल सर्च फॉर माई फ्लैश कार्ड्स. So dear students, जितनी देर में आप लोग ये डिस्कशन कर रहे थे, श के साउंड वाले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो मैंने अपने लाइब्रेरी कॉर्नर से कुछ फ्लैश कार्ड्स आइडेंटिफाई किए. नाउ टीचर्स, व्हाई डू वी यूज फ्लैश कार्ड्स? वी यूज फ्लैश कार्ड्स एज अ विजुअल रिसोर्स जिसको बच्चे हाथ में भी पकड़ते हैं, और जितनी दफ़ा वो किसी फ्लैश कार्ड को गो थ्रू करते हैं उसका नाम रिकॉल करते हैं जहन में. एंड व्हेन दे स्पीक अप लाउडली तो दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द साउंड दे आर टॉकिंग एट दैट पर्टिकुलर लेसन और एट दैट पर्टिकुलर डे. सो लेट्स सी कि मुझे कौन से श के साउंड वाले ऑब्जेक्ट्स की फ्लैश कार्ड्स मिले अपने लाइब्रेरी कॉर्नर से. आई फाउंड अ फ्लैश कार्ड ऑफ अ शार्पनर. आई ऑल्सो फाउंड अ फ्लैश कार्ड ऑफ sheep. Good. Now you can have a look on the flashcard. This is a ship. It's a ship. Good. This is the flashcard of a shell. This is a flashcard of a sheet of paper. Sheet.
enforce करें हम, we are using the correct pronunciation for the sound sh. This is a flashcard of a shop. I found a little flashcard of a fish. Sh. जी हाँ, sometimes the sh sound can come in the end also. So fish also had the sh sound because we are trying to recognize the sound. So fish also had the sh sound. And now the last one I found is a bottle of shampoo. Shampoo. So teachers, अगर बच्चों ने अपने घर के कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं और आपको अब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि बच्चों को श की रिकग्निशन हो गई है, so let's move on and see can they identify what is given on the book. It's given, ये एक शिप की पिक्चर है जी, शाबाश, और इसमें जो वर्ड लिखा है शिप उसमें कुछ डॉट्स हैं. So this is ship. The missing part is sh. So आपने dots को trace करना है and complete it. Now let's see what is the next picture. It's a picture of a shop. Trace the dotted letters and complete your word shop. The next picture is of a shell. Shell. Trace the dots and complete the word shell. This is a picture of a shark. Shark. Complete the dots and complete the word shark. Sharpener. Yes, we all have a sharpener with us. हमने pencil को sharp करना होता है. So sharpener also starts from the sound sh. The digraph sh. This is the bottle of a shampoo. Sh. Shampoo. Sh. Shampoo. Now we have revised those words. Dear teachers, हमने sh की sound को दोबारा से reinforce भी किया, revise भी किया. अब बच्चों ने जो है वो अपनी किताब में दिए हुए सफ़े को मुकम्मल करना है और उसके बाद उन्होंने 4 lines की शीट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है if there is time. So you can provide them with copies or worksheets जिसके ऊपर lines लगी हों 4 और वो sh की जो है वो writing को practice करेंगे. Please provide them neat and clean environment to do their work. अब उन्होंने sh को revise करना है और writing करनी है. So please pause the video and give them time to complete the page. जी प्यारे बच्चों, जब आपने बुक में sh का जो given page है उसको complete कर लिया, so this was the page you were working on and you must have completed shape. आपने मेरे साथ read करना है shop, shell, shark, sharpener and shampoo. Now the thing to notice is that ये तमाम अल्फाज sh की sound से start हो रहे हैं. sh की sound is a digraph और इसको जो letters जिनके साथ हम लिखते हैं उनकी वजह से आप इसको पहचानेंगे कि this is sh. Now what you have to do is you have to revise this page at home as your homework and you have to make sure that you also practice some extra words in the given worksheet. Now what is your task in the given worksheet? You will look at the pictures, you will say the name out loud and then you will write the missing digraph. Of course, by the end you can also color the pictures. Now once you look at the picture, say the name, fill up the missing sound and make sure you are bringing that worksheet to school next day so the teacher can check it and paste it in the classrooms and you can have a look at each other's works. So good to know that आपको sh की sound अब समझ आ गई है और sh की recognition के लिए टीचर्स ने आपको जितनी भी एक्टिविटी करवाई हैं वो सब अब आप खुद से कर सकते हैं और sh को अगर टीचर कहे कि बोर्ड पे आके लिखें तो मार्कर से आप उसको बोर्ड पे भी लिख सकते हैं. So teachers provide them different opportunities to write and trace the sh digraph. Sh is not a letter, it's a digraph and it's a combination of 2 letters. इस वजह से टीचर्स जब भी बच्चों को आप दिखाएं तो sh all together दिखाएं, just like one sound. sh. sh. तो आज का प्यारे बच्चों जो हमारा लेसन था, it was about recognition of digraph and use correct pronunciation. So teachers, they are recognizing, now they have recognized already. 2 दिन हमने साउंड पे लगाए हैं और साउंड थी हमारी श की जिसको आपने खूब प्रैक्टिस किया किताब पर भी और
फ्लैश कार्ड्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ भी। सो टीचर्स, अब इस लेसन को मज़ीद एम्फेसाइज करना है आपने, बच्चों को मज़ीद एक्टिविटीज़ देना चाहें तो कराएं, लेकिन जितना ज़्यादा आप उनको विजुअली श लिखा हुआ दिखाएंगी, फॉर एग्जाम्पल ऑन न्यूज़ पेपर कटिंग्स, बच्चों को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी इस साउंड की। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेसन के लिए श की एप्लीकेशन के लिए तैयार होकर आइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।